Okay. Is screen visible to you? स्क्रीन नजर आई आप लोगों को? Okay. So let's start a lecture. Who is writing on the board? Don't write on the screen because it is going to visible to everyone now. Then. Okay. Today we have a very important lecture that is Introduction to Artificial Neural Networks. We have studied support vector machines, and as I told you earlier that there are two very much important topics that are SVM and artificial neural networks in the course of machine learning, artificial intelligence, deep learning. So these two are very important topics related to artificial intelligence as well as as well as this is I think this is a very much important topic in terms of its application, in terms of even in terms of exam. You guys have to listen it very carefully, so then you don't have to complain that the paper was too much conceptual or paper was unable to be solved. So that's why listen my each and every word with extreme care and attention. Okay. So there are only 20 participants in the class, and I think we have a 39 strength. So half of the class is still missing, and I have yesterday announced that today at 7:30 we will have a class. So I think we should wait or we should start. 21 participant now. I think we should start. I have started recording. So uh, today we will have a lecture on artificial neural networks. So as depicts on the name, artificial means something man-made, that is artificial. Neural networks mean neural is has been derived from the neurons, which usually is the very basic unit, thinking unit. We can call it thinking or acting unit in the human brain. So artificial neural networks. So the network which is a human made and the concept of which has been derived from the action of the human brain. So this is that's why we call it artificial neural network. This is very much simple, not that much complex. But this lecture, especially this topic, involves too much mathematics as well. We will have discuss introduction, overview. Then we will discuss perceptron. What is perceptron? We will discuss it in detail. Then we will study multi-layer perceptrons. Then training method, especially back propagation. Uh, then we will design and we will also train some issues. At the end of the day, we will discuss convolution neural networks if we have a time then. Sorry, at the end of the semester. This in this lecture we will just study introduction slash overview. For the machine learning students, this is very much important topic in terms of designing and in terms of uh, uh, analysis. And for the student of computational techniques, we will also have to study 3 to 4 an extra topics after the CNN. So हम रिपीट कर लेते हैं कि अभी तक जो हमने पढ़ रहे थे रिकॉग्निशन या क्लासिफायर डिज़ाइन, उसमें हम क्या कर रहे थे? उसमें हम ये पढ़ रहे थे कि हम एक इमेज देते हैं या कोई डेटा देते हैं, डेटा सेट या इमेज, ठीक है? और फिर हम फीचर रिप्रेजेंट करते हैं कि यार इन फीचर्स के बेस पर आपने क्लासिफाई करना है।
कि ये किस क्लास को बिलोंग करता है, और फिर हम उस तरह क्लासिफायर को ट्रेन करते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास 2 या 3 क्लासेस बन जाएंगे, फिर हम क्लास को लेबल करते हैं कि यार ये क्लास ए है, ये क्लास बी है, ये क्लास सी है। इसको हम कहते हैं शैलो रिकॉग्निशन सिस्टम, ठीक है। शैलो इन सेंस इसलिए कहते हैं कि इसके रिकॉग्निशन सिस्टम में इसके अंदर की मैकेनिज्म जो है ना वो डिफाइंड नहीं होता, वो डिफाइंड नहीं बल्कि होते नहीं इस तरह से। एएनएन जो है वो उसमें थोड़ा सा डीप एनालिसिस होता है। ये हैंड क्राफ्टेड फीचर रिप्रेजेंटेशन है, यानी हम डिसाइड करते हैं कि ऑन द बेसिस ऑफ which features you have to decide or classifier have to decide that to which class the data point belongs, ठीक। सो फीचर जो रिप्रेजेंटेशन है या फीचर सिलेक्शन है वो हमारी मर्जी होती है, इसको कहते हैं हैंड क्राफ्टेड फीचर रिप्रेजेंटेशन। ऑफ द शेल्फ बहुत सारे से क्लासिफायर है जो हमको ट्रेन करते हैं, खुद ही फीचर्स देके हम बाहर से क्लासिफायर मंगवा लेते हैं, यानी मंगवाने का मतलब किसी और से डिजाइन कर लेते हैं, फिर हम उसमें फीचर फिट कर लेते हैं, हम उसमें डेटा सेट फिट कर लेते हैं, फिर वो क्लासिफाई कर लेते हैं। अभी तक हम ये पढ़ रहे थे, यानी कि if someone asks you from you guys an exam that if I have to handcraft features by ourselves or by myself, then is ANN is applicable or not? Yeah, can we employ ANN in that scenario? So the answer will be no. So ANN selects features by himself, by itself. Okay. So this is not our job of feature selection, and this feature selection is itself a very complex job in a case of data set in which we have more than 1,000 values. So now, after shallow, we have a second type of recognition, that is deep recognition system. So in this recognition system, we have a data points or data set which passes through layer 1, it gives some output. Then it passes through layer 2, it gives some output. Then it passes through layer 3, it gives some output. So what is the difference between shallow and deep recognition system? In deep recognition system, we have a multiple layers, 1, 2, 3, or maybe 10 or 1,000. But in shallow recognition system, we only have a one layer, and that is trainable classifier. So in this case, features hierarchy can be learned from pixel to classifier. So that is not as much simple as it is seen in the slides. So each layer extracts features from the output of previous layer. This layer 2 extract the features from layer 1. Layer 3 extracts a feature from layer 2. So layer 3 input is actually the output of layer 2. Layer 2's input is actually the output of layer 1. So that's why we call it a deep recognition. There's a multiple there are multiple layers. So we have to train all the layers jointly. Not that we have to train single layer at a time. We will train layer 1, layer 2, layer 3 all at single time. This is a bit comparison between neural networks versus support vectors machine. Neural network is a deep learning, and support vector machine is a shallow learning. So this is a Google trend. Let me zoom it a bit for you guys. Deep learning versus SVM. Deep learning means artificial neural networks. So before 2013, SVM were more used as compared to ANNs or deep learning. But after 2013, ANN has been employed very widely, and see the difference at the end of the graph.
बहुत बड़ा फर्क है, टू लार्ज डिफरेंस। नजर आ रहा है आपको इतना फर्क? ठीक है, इट मीन्स के गूगल जैसे गूगल और गूगल जैसे और जितने भी सर्च इंजन हैं वो सारे क्या यूज़ कर रहे हैं, एएनएन यूज़ कर रहे हैं। हाँ, एएनएन क्यों यूज़ कर रहे हैं, वो जब आगे हम जाएंगे तो आपको खुद समझ आ जाएगी कि एएनएन की क्या वजह है कि हम एसवीएम से निकल के एएनएन की तरफ गए। एक तो लिमिटेशन क्लासेस की, एक नंबर ऑफ क्लासेस इन सपोर्ट वेक्टर मशीन should not be greater than 2. SVM can only classify data set in 2 classifiers or 2 classes. उसके बाद फिर मल्टी क्लास SVM बनने शुरू हो गए, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से जो है वो SVM बड़े कम्प्लेक्स हो गए। इन अ केस कि जब SVM कम्प्लेक्स नहीं थे, उस केस में सिर्फ 2 क्लासेस की तक की बात थी। लेकिन कोई भी ऐसी चीज़ जिसमें मतलब ऐसा डाटा अवेलेबल ही नहीं है, फिजिबल ही नहीं है, जिसमें क्लासेस काफ़ी ज़्यादा ना हो, तो उस वक्त SVM फिर उसकी कम्प्लेक्सिटी इतनी बढ़ गई थी कि फिर SVM की जगह ANN ने ले ली। अच्छा, अब ये इंस्पिरेशन है कि आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क्स की इंस्पिरेशन कहाँ से आई है। ये एक डायग्राम है बायोलॉजिकल न्यूरॉन्स की। देख लें, इसके स्टार्ट में डेंड्राइट्स हैं। डेंड्राइट्स क्या है, ये कनेक्शन है टुवर्ड्स आउट द आउटर वर्ल्ड। ये डेंड्राइट्स डायरेक्ट कनेक्टेड हैं टुवर्ड द सेल बॉडी, ठीक है, और उस सेल के अंदर भी न्यूक्लियस भी है। तो ये डेंड्राइट्स बाहर से डेटा लेके आ जाते हैं सेल में, और सेल से डेटा चला जाता है न्यूक्लियस, और फिर एक न्यूक्लियस दूसरे न्यूक्लियस के साथ कनेक्ट है थ्रू ए लाइन, ठीक है, उसको हम कहते हैं एक्सॉन हिलॉक, ठीक है, इस लाइन को। अब एक्सॉन हिलॉक में विद सम गैप्स देयर आर प्रीसिनेप्टिक सेल्स, ठीक है। प्रीसिनेप्टिक सेल्स क्या करते हैं, वो उस जो पीछे से सिग्नल आ रहा होता है उसको